So hello guys, welcome back. And in this lecture, we are going to discuss about nested list, nested dictionary basically within the list and list within the dictionary. So as we know, in previous lecture, we have discussed about dictionary, introduction about dictionary and how we can traverse the dictionary. Now we will be discussing about nested dictionary and list. So see, suppose we have multiple students, we have 5 students, 3 students to store. That means we have 5 students and which has some information about the students and we just want to store. So in dictionary format, we can store easily, but we have 5 students. So what we will do, we will apply a list in this way. So this is the information of first student. Now we can apply a comma, use a comma, and then just copy this. Just copy this. This is second student. I'm just pressing enter to manage it. Now we can change the name. We can change the name like Raju Kumar. This is the second one, second student. Now change the age, 35, change the address. So this is your next second student. Same thing, we can use a comma and we can paste again for third student. Again, press enter to manage it. Again, change the name. Change the name like Arjun Yadav. Okay. Age is like 40, you can say. And address is same, Kanpur or anything. There are. So we have the information of 3 students, records of 3 students. We are using dictionary. We are using a dictionary to store a particular student information or records. And finally, to collect all these information, we are using list. So collectively, we can use list to collect all the dictionaries, and every dictionary has the record of a particular student. So finally, we have 3 students. So see, in major level, in a big picture, you can say this is student is a list, but it is a collection of dictionary. It is a collection of dictionary. हमारे पास मेजर लेवल पे क्या है कि एक लिस्ट है और इसके अंदर 3 अलग अलग डिक्शनरी हैं और हर एक डिक्शनरी के अंदर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से हम लिस्ट के अंदर डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर हमें कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फेच करनी है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट एंड वी नो दैट स्टूडेंट इज अ लिस्ट। तो एक लिस्ट है तो हमें लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग करनी है, तो हमने लिखा यहाँ पे फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब है ये बात। अब इसके अंदर आपको क्या चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट 1 लिखते ही ये इस डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करता है और डिक्शनरी के अंदर की इंफॉर्मेशन लाने के लिए आपको क्या करना होता है? ये लिखना होता है। तो हम ये लिख देंगे बस। ये आपको स्टूडेंट 1 यानी यहां से एज निकाल करके दे देगा। इसको एक बार रन करके ये देखो 35 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको फेच कर सकते हो, इस पे लूप लगा सकते हो। जैसे कि हमने फॉर आई इन स्टूडेंट लिख दिया, तो स्टूडेंट अपने आप में एक लिस्ट है, ये आई ट्रैवर्स करेगा तो आई में एक एक करके आइटम आएगा और ये पूरा का पूरा आइटम अपने आप में क्या है? अपने आप में डिक्शनरी है। तो आप यहाँ पे प्रिंट करोगे आई, तो आप देखना अलग अलग लाइन में तीनों डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। ये देखो अलग अलग लाइन में तीनों डिक्शनरी प्रिंट हो। और अगर आप इस पे भी चाहते हो फर्दर लूप लगाना तो आप लगा सकते हो फॉर जे इन क्या लिख सकते हैं हम? आई। आई अपने आप में एक डिक्शनरी है और यहाँ पे लिख दो आइटम्स। सी, यहाँ पे आओ, आपने जे और के ले लेते हैं, 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे ना हमें, अभी हमने समझा। और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट जे इज इक्वल, कॉमा करके लिखते हैं, इक्वल के। अब देखो ये क्या करेगा, सभी कीज और वैल्यूज को प्रॉपर वे में प्रिंट करके दे देगा। तो आप देखो यहाँ पे एड्रेस 1 ये रहा पहला स्टूडेंट, ये रहा दूसरा स्टूडेंट, ये रहा तीसरा स्टूडेंट। तो आप चाहते हो कि हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करें, तो आप प्रिंट अप्लाई कर दो यहाँ। तो एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के बाद ये लाइन चेंज कर रहा है। सो इन दिस वे यू कैन यूज डिक्शनरी विद इन द लिस्ट। नाउ it's time to see that the list within the dictionary, how we can put list into dictionary within the dictionary. तो सपोज करो किसी के पास 2 एड्रेस हैं या 3 एड्रेस हैं, 4 एड्रेस हैं, वो शो करना चाह रहा है, तो आप यहाँ पे वो सारे एड्रेसेस लिख सकते हो। या हॉबीज हो सकती हैं, किसी के पास मल्टीपल हॉबीज हैं तो आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ।
एड्रेस को ऐड लिख देता हूँ, ठीक है, एड्रेस को ऐड लिख देता हूँ। आप सपोज करो हर एक के पास 2-2 3-3 अलग अलग एड्रेस हैं, तो हम लिस्ट बना सकते हैं कि चलो इसके पास 3 एड्रेस हैं, तो हम लिस्ट बना देते हैं। तो शॉर्ट में ले लेते हैं, जैसे KNP हो गया, एक एड्रेस ये हो गया, एंड यहाँ पे लखनऊ हो गया, यहाँ पे DDM हो गया, देहरादून हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी L को ले लेते हैं, यहाँ पे चलो PYJ ले लेते हैं, ठीक है, इसका एड्रेस। तो ये भी अपने आप में एक लिस्ट है, इसमें चलो इसके 2 ही एड्रेस सपोर्ट। एंड इन दिस डिक्शनरी वी हैव 3 एड्रेसेस, like first address is DDM, and second is HRD, and third is suppose PYJ. So you can see we have a list within the dictionary to show the multiple addresses. Now if you want to print the address, you have to use student, put an index number according to the student. Like if you want to print first index number, then use 0, and now we want to print address, then write the key name and just run this. So it will print the list, complete addresses, all addresses of this student. And now we want to print only first address, then you can use index number. See, so it will print. So if addresses are 2 types, like permanent and temporary, then you can divide it. So within the list, or you can apply a dictionary within the dictionary in this way. So like temporary address, temp, can't, and here we can write permanent. So this is permanent address. See, dictionary within the dictionary. So in this way we can use dictionary into list into dictionary, dictionary into dictionary, anything as per the requirement. This is that is the thing what I can say, and I just want to make you comfortable with that. See, so now if I'm writing student 0, that means we are using this student information, and now we are typing add, that means this is the value, this is the key where I was using. And now if you are trying to understand, then you can say add is just a key and it has a dictionary. See, it is a dictionary, and if you want to print any value, then you have to use key name. Just like if you want to print permanent address, then you have to use PER and just run it. Is there any mistake? Dictionary, we have to close a dictionary, main dictionary. This is main dictionary. See, I'll go. So guys, I think these all things are making sense to you all, and I have explained all the things related to dictionary and nesting of the dictionary and list. So that's all for this lecture, for this video. If you have any doubt or question, you can comment, like, share, and subscribe the channel and video if you're liking this, to support the student, to support us. And for further information or any type of queries, you can contact us. Thanks for watching.